Hello everyone and welcome back to yet another video of the chemistry series. And in this video we'll be doing the 8th chapter from 12th class chemistry, the DNF block. For the ones who are new here, we do NCERT and every line of it in the least possible time so that you can watch your videos on the go, even in the very last moment, and you can cover every line of it. So let's begin. The D block of the periodic table contains the elements of the groups 3 to 12 in which the d orbital are progressively filled in each of the 4 long periods. The elements constituting the F block are those in which the 4f and 5f orbitals are progressively filled in the latter 2 long periods. These elements are formal members of group 3 from which they have been taken out to form a separate F block of the periodic table. The names transition metals and inner transition metals are often used to refer to the elements of DNF block. So a very introductory, the first paragraph talks about D ब्लॉक में हमारे पास ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 जाते हैं और उसमें जो ग्रुप 3 है उसमें से हमने कुछ एलिमेंट्स को जो है थोड़ा सिमेट्री मेंटेन करने के लिए बाहर निकाला हुआ है, उनको हमने नीचे से अलग से एफ ब्लॉक में रखा हुआ है. दोज आर द इनर ट्रांजिशन मेटल्स. एंड यूजुअली हमें पता है जब भी कोई ब्लॉक का नाम होता है तो वो उस बेस पे होता है कि उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा जो शेल है उसको एंटर करेगा. देयर आर मेनली 3 सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स. ठीक है, ऐसे 3 पीरियड्स में लिखते हैं उनको. वी हैव द 3D सीरीज फ्रॉम स्कैंडियम टू zinc. Then the 4D series we have I to CD, 5D La to Ag, omitting Ce to Lu. The fourth 6D series, तो हमारे पास 3D series है, 4D series है, 5D series है ऐसे, and even the 6D series which begins with AC and is still incomplete, उसमें अभी भी fill up हो रहा है. The 2 series of the inner transition metals 4F and 5F are known as lanthanoids and actinoids respectively. हमें already पता है. Strictly speaking, a transition element is defined as the one which has incompletely filled d orbitals. तो खाली d orbital होना is not sufficient, it should be incompletely filled. तो इनमें क्या, in its ground state or any of its oxidation states. ठीक, अब यहाँ पे जिंक, कैडमियम और मर्करी का एक्सेप्शन आता है. इन 3 में क्या है, they're from group 12 and they have fully filled D10 होता है उनमें configuration in the ground state as well as in their common oxidation states and hence are not regarded as transition metals. वो transition नहीं कर सकते, उनको transition metal नहीं कहेंगे क्योंकि उनके पास free valence electrons नहीं होते हैं, वो सारे paired होते हैं. However, being the end numbers of the 3 transition series, the chemistry is studied along with the chemistry of the transition metals. The presence of partly filled d or f orbitals in their atoms sets the study of the transition elements and their compounds apart from that of the main group elements. जो हम अब तक कर चुके हैं, p block, s block, that's something different. d block different है क्योंकि उनको transition metals बोला जाता है और उनमें ऐसा क्या है कि हम उनको transition metals बोलते हैं in the first place. However, the usual theory of valence as applicable to the main group elements can also be applied successfully to the transition elements. Various precious metals such as silver, gold and platinum and industrially important metals like iron, copper and titanium form part of the transition metals. In this unit, besides introduction, we shall first deal with the electronic configuration, occurrence and general characteristics of the transition elements with special emphasis on the trends and the properties of the first row, 3D transition metals and the preparation and properties of some important compounds. That's what we'll be doing. Oxidation स्टेट वगैरह. तो ये बोल रहे हैं कि हमें क्या क्या करना है. फर्स्ट इज द पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल. अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, यू नो इट्स समवेयर इन द मिडिल. डी ब्लॉक ऑक्यूपाइज द लार्ज मिडिल सेक्शन फ्लैंक्ड बाय द एस एंड पी इन द पीरियोडिक टेबल. द वेरी नेम ट्रांजिशन गिवन टू द एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक क्यों है, क्योंकि उनका पोजीशन एस और पी के बीच में है. अगर एस से पी जाना है तो आपको ट्रांजिशन करना होगा. द डी ऑर्बिटल्स ऑफ द पेनल्टिमेट एनर्जी लेवल इन देयर एटम्स रिसीव इलेक्ट्रॉन्स गिविंग राइज टू द 3 रोज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, दैट इज 3D, 4D एंड 5D. ऐसे 3 रोज मिलते हैं horizontally. The fourth row of 6D is still incomplete, जो हमने पहले ही पैराग्राफ में देखा. Penultimate means n-1. If n is the number of shells, तो n-1 is penultimate. Anti-penultimate means n-2, जो हम F block में देखेंगे. Electronic configuration is very important. इस पूरे table से ही आपको समझ आएगा. Doing the theory has no point, but still I'll read it. In general, the electronic configuration of these elements is n-1. This is very important. n-1 d1 to 10 and ns 1 to 2. n-1 का ही मतलब है जो मैंने आपको बोला, the penultimate shell stands for the inner d orbitals which have 1 to 10 electrons. In the outermost ns orbital may have 1 or 2 electrons, वो outermost होता है. However, this generalization has several exceptions because a very little energy difference between n-1d and ns orbitals. जो ns और n-1d होते हैं उनमें उतना energy gap नहीं होता. ठीक है, इसीलिए transition होता है electrons का, जो हम आगे देखेंगे. A consequence of this factor is reflected in the electronic configuration of chromium and copper in the 3D series. हम देखते हैं अभी in the table. Consider the case of chromium, for example, which has a 3d5 4s1 instead of 3d
3d4 4s2। तो क्योंकि 4s2 से इलेक्ट्रॉन 3d4 में जाके 3d5 बना के उसको सिमेट्री की वजह से और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल को स्टेबल बना देगा, it can do a transition from 4s2 to 3d4 only. The energy gap between the two sets 3d and 4s is small enough to prevent electron entering the 3d orbital. Similarly, in case of copper, configuration 3d10 है 4s1 है, लेकिन 3d9 4s2 होना चाहिए. This is because 4s और 3d में उतना भी एनर्जी डिफरेंस नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स कैन गो हियर एंड देयर स्टेबिलिटी के हिसाब से. ये हमारा पहला सीरीज है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनीडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक. ऐसे ही इनके एटॉमिक नंबर्स दिए हैं फ्रॉम 21. ये हमारा 4s एंड 3d. ठीक है, 3d सीरीज इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि 3d में इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे. 4s फोर्थ पीरियड को बिलोंग करता है. s इलेक्ट्रॉन्स इनमें आप देख रहे हैं, क्रोमियम में एक तो 1 है और हमारे पास कॉपर में 1 आ रहा है. एंड वाई इज दिस सो? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने देखा अभी कि 4s और 3d में उतना डिफरेंस नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं, हम स्टेबलाइज कराते हैं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स को. देन यू सिमिलरली हैव द सेकंड सीरीज. ठीक है, और यहाँ पे 3d सीरीज, फोर्थ सीरीज. ठीक, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ जिंक, कैडमियम, मर्करी अभी हमने देखा एक्सेप्शनल है, आर रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फॉर्मूला दिस. द ऑर्बिटल्स इन दीज एलिमेंट्स आर कंप्लीटली फिल्ड. हाँ, D10 है ऑलरेडी इन द ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेज, देयरफॉर दे आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. एक ही चीज दो बार लिखी हुई है इन्होंने. द d ऑर्बिटल्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स प्रोजेक्ट टू द पेरिफेरी ऑफ एन एटम मोर देन द अदर ऑर्बिटल्स, दैट इज s एंड p. हमें पता है d जो है वो ज्यादा पेरिफेरल होता है बिकॉज उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कम होता है. दे मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सराउंडिंग्स एज वेल एज अफेक्टिंग द atoms or molecules surrounding them. तो इसका surrounding से भी relation रहेगा. In some respects, ions of a given Dn configuration, n is 1 minus 9, have similar magnetic and electronic properties. With partly filled d orbitals, these elements exhibit certain characteristic properties such as display of a variety of oxidation states, formation of colored ions, and entering into complex formation with a variety of ligands, etc. ये सारे properties हमें one by one discuss करने हैं. ये basically इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास transition हो रहा है. Electrons can go from one state to another state. The transition metals and their compounds also exhibit catalytic property, वो भी हमें देखना है, and paramagnetic behavior. We're going to talk about this in detail. They've been discussed. There are greater horizontal similarities in the properties of the transition elements in contrast to the main group elements. However, some group similarities also exist. We shall first study the general characteristic and their trends in the horizontal rows. तो हम horizontally ही usually इन series को पढ़ते हैं. ठीक है, तो पहले इन्हें physical property लिया है. Nearly all the transition elements display typical metallic properties such as high tensile strength, ductility, malleability, high thermal and electrical conductivity, and metallic luster. With the exceptions of zinc, cadmium, mercury, and manganese, they have one or more typical metallic structures at normal temperatures. तो physical property सारे metals की तरह होंगी क्योंकि हम उनको transition metals भी बोलते हैं. तो ये सारे properties, tensile strength, ductility, malleability, etc., high thermal, electrical conductivity, ये सारा हमने देखा है metals में. अब यहाँ पे zinc, cadmium, mercury और manganese जो है, इनके पास एक से ज्यादा मेटालिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. तो इसीलिए यहाँ पे जब इन्हें मेटालिक स्ट्रक्चर दिया है जो लैटिस होती है मेटल्स की, दैट विल आल्सो बी अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स. तो यहाँ पे सब में दिया हुआ है मैंगनीज का, ठीक है, मोर देन वन लैटिसेस पॉसिबल, जिंक, कैडमियम, मर्करी और हमारा जो मैंगनीज है. ठीक, तो बाकी सब में हम यहाँ पे देख रहे हैं यू हैव HCP इन सारों में जो पहली 3 डी सीरीज आपको दी हुई है. वी नो BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड और CCP हमारा क्यूबिक क्लोज पैक होता है. ठीक है, और X का मतलब यहाँ पे एक टिपिकल मेटल स्ट्रक्चर. ठीक है, ऑलराइट. The transition metals with the exception of zinc, cadmium, mercury, अब आप ये हमेशा याद रखेंगे इनमें exception होगा because वो transition metals के अंदर आते ही नहीं है, are very much hard and have low volatility just like metals. The melting and boiling points are high. Again, depicts the melting and boiling points. यहाँ आप देख सकते हैं the high melting points of these metals are attributed to the involvement of greater number of electrons from n-1d in addition to the ns electrons in the interatomic metallic bonding. तो जब हम melting point, boiling point देखते हैं, हम metallic bonding को consider करते हैं. लैटिस कितना स्ट्रॉन्ग है, यानी जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा हमारा जो है लैटिस में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होंगे, उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट हाई होने वाला है. In any row, the melting point of these metals rise to a maximum at D5 except for anomalous values of manganese and Tc. यहाँ पे manganese और Tc you have to remember इनके anomalous है, they and fall regularly as the atomic number increases. They have high enthalpies of atomization.
एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन मतलब हमने किसी भी लैटिस को तोड़ा, एटम्स में हमने उसको तोड़ा और फिर उन एटम्स को हमने गैसेस स्टेट में कन्वर्ट किया, उसको एटोमाइजेशन बोलते हैं। तो इनकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी हाई होती है, ठीक है। मैक्सिमा एट अबाउट द मिडल ऑफ ईच सीरीज इंडिकेट दैट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डी ऑर्बिटल इज particularly favorable for strong interatomic interaction. In general, greater the number of valence electrons, stronger is the resulting bonding, जो मैं आपको बोली थी. Since the enthalpy of atomization is an important factor in determining the standard electrode potential of a metals with very high enthalpy, that is very high boiling point, tend to be noble in their reactions, ठीक है। रिएक्शंस में नोबल बिकॉज ये इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का भी वैल्यू हमें बताते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, क्योंकि वो बहुत हाई होते हैं तो ये उतने भी रिएक्टिव नहीं होते। अनदर जनरलाइजेशन दैट मे बी ड्रॉन फ्रॉम दिस फिगर इज दैट द मेटल्स ऑफ द सेकंड एंड थर्ड सीरीज हैव ग्रेटर एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन दैन द corresponding elements of the first series. This is an important factor in accounting for the occurrence of much more frequent metal-metal bonding in compounds of the heavy transition metals. जब आप नीचे नीचे आते हैं हेवी सीरीज में, सीरीज थर्ड सीरीज में आते हैं 3D सीरीज में, वहां पे जो है मेटल मेटल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर हो जाता है इन केस ऑफ हेवियर ट्रांजिशन मेटल्स। एज अ रिजल्ट उनका जो मेल्टिंग पॉइंट भी है वो ज्यादा होने वाला है। अगेन एटॉमिक नंबर और यहाँ से आपको एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन दिया हुआ है। मूविंग ऑन टू variation in atomic size and ionic size, ठीक है। In general, ions of the same charge in a given series show progressive decrease in radius with increasing atomic number. हमें पता है across the period radius decreases, right? This is because the new electron enters a d orbital each time the nuclear charge increases by unity. It may be recalled that the shielding effect of a d electron is not that effective, hence the net electrostatic attraction between the nuclear charge and the outermost electron increases and the ionic radius decreases. क्योंकि हमें पता है shielding effect उतना ज्यादा नहीं होता है डी इलेक्ट्रॉन का, इसीलिए जो है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वो बढ़ जाती है और आयनिक रेडियस जो है वो कम हो जाता है। जितना ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगा उतना रेडियस कम हो जाएगा। द सेम ट्रेंड इज ऑब्जर्व्ड इन द एटॉमिक रेडियाई ऑफ अ गिवन सीरीज, हाउएवर द वेरिएशन विद इन अ सीरीज इज क्वाइट स्मॉल। हाँ, एक सीरीज में बहुत कम वेरिएशन होगा क्योंकि मैंने आपको बोला मोर और लेस सिमिलैरिटीज होते हैं। एन इंटरेस्टिंग पॉइंट इमर्जेस व्हेन एटॉमिक साइज ऑफ वन सीरीज आर कंपेयर्ड विद दोज ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन द अदर सीरीज। The curves show an increase from the first to the second of the elements, but the radii of the third are virtually the same as those of the corresponding members of the second series. This phenomenon is associated with the intervention of the 4f, which must be filled before the 5d. ठीक है, the filling of 4f before 5d. अब 5d से पहले हमारे पास 4f आता है, the lanthanoids which come in between, ठीक है, result in a regular decrease in atomic radii called the lanthanoid contraction, which essentially compensates for the expected increase in atomic size with increasing atomic number. तो हमें क्या समझ आया? लैंथेनाइड कंट्रैक्शन इज द ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियी और आयोनिक रेडियी ऑफ द एलिमेंट्स इन द लैंथेनाइड सीरीज फ्रॉम एटॉमिक नंबर 57 to 71, ठीक है, ल्यूटियम तक हम देखते हैं, जिसकी वजह से विच रिजल्ट्स इन स्मॉलर देन अदरवाइज एक्सपेक्टेड एटॉमिक रेडियी और आयोनिक रेडियी, ठीक। The factor responsible for the lanthanoid contraction is somewhat similar to that observed in an ordinary transition series and is attributed to similar cause, that is imperfect shielding of one electron by another in the same set of orbitals, ठीक है। F block, D block का बहुत poor shielding होता है, however the shielding of one 4f electron by another is less than that of one D electron by another, and as the nuclear charge increases along the series there is fairly regular decrease in the size of the entire 4fn orbitals. तो क्या होता है, 4f electrons जो होते हैं वो उनकी शील्डिंग डी ऑर्बिटल से भी बहुत ज़्यादा कम होती है, बहुत वीक, ठीक है। पुअर शील्डिंग की वजह से अट्रैक्शंस कम हो जाते हैं और साइज जो है इवेंचुअली बढ़ जाते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन जब बढ़ेगी तो साइजेस कम हो जाएंगे एंड दे हैव एन इनवर्स रिलेशन। द डिक्रीज इन मेटालिक रेडियस coupled with increase in atomic mass results in a general increase in the density of these elements. Thus from titanium to copper the significant increase in the density may be noted. अगेन यहाँ पे यही चीज़ दी एटॉमिक नंबर के साथ फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डू गो थ्रू दिस ऑल ऑफ दिस एक्चुअली, एटलीस्ट पहले सीरीज़ के लिए, ठीक है, स्कैंडियम टाइटेनियम वाले सीरीज़ के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव कुछ एक्सेप्शंस भी, जैसे यहाँ पे हमने एक्सेप्शन देखा था, यहाँ पे ऑलराइट, सॉरी नॉट हियर, क्रोमियम और यहाँ कॉपर में हमने देखा था, यस, यहाँ पे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आते हैं, राइट, और एनर्जी में उतना डिफरेंस नहीं होने की वजह से एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, all right, what is happening like this.
तो बेसिकली क्या होना चाहिए था, एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन अक्रॉस द पीरियड वो बढ़ जाना चाहिए था, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका नंबर भी बढ़ जाता है, तो एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन भी बढ़ना चाहिए था, बट देयर इज दिस ट्रेंड यू कैन सी फॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड में ख्याल रखना है, जैसे इसलिए इन्हें यहाँ पे ये इनके पॉजिटिव आयंस बनाए, देयर इज अ रीजन द एनसीईआरटी डज एनीथिंग। फिर डेंसिटी भी दिया हुआ है, just go through, you don't have to remember the values thoroughly. Ionization enthalpies. Due to an increase in nuclear charge which accompanies the filling of the inner d orbitals, there is an increase in ionization enthalpy along each series of the transition elements from left to right. Left से right जाएंगे, obviously जो ionization enthalpy है उसका क्या होगा, it will increase. However, many small variations occur, ठीक है, वो आप टेबल से देखेंगे. These values show that the successive enthalpies of these elements do not increase as steeply as in the main group elements. Although the first ionization enthalpy in general increases, the magnitude of the increase in the second and third ionization enthalpies is much, much higher. The irregular trend in the first ionization enthalpy of the 3D metals, though of little chemical significance, can be accounted for by considering that the removal of one electron alters the relative energies of 4s and 3d orbitals. तो क्या हो रहा है, जब हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, हमें उसके बाद भी चेक करना है कि अब क्या कॉन्फ़िगरेशन बन गया, कहीं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं बन गया, तो इन दैट केस इट बिकम्स इवन मोर स्टेबल, ऑलराइट. या फिर कभी कभार ऑलरेडी स्टेबल होता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. जैसे जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ही एक्सेप्शंस देखे, दे विल फॉलो ऑल थ्रू. Thus, there is a reorganization energy accompanying ionization with some gains in exchange energy as the number of electrons increases and from the transference of s electrons into d orbitals. There is the generally expected increasing trend in the values as the effective nuclear charge increases. However, the value of chromium is lower because of the absence of any change in the d configuration, and the value of zinc higher because it represents an ionization from the 4s level. The lowest common oxidation state of these metals is +2, lowest common, to form the M2 positive ions from the gaseous atoms. Some of the first and second ionization energies is required in addition to the enthalpy of atomization for each element. जो मैं आपको बता रही थी, पहले enthalpy of atomization के लिए लैटिस तोड़ेंगे, एटम्स को गैस में कन्वर्ट करेंगे, गैस से इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, फिर हमारा आयनाइजेशन होगा. The dominant term is the second ionization enthalpy, which shows unusually high values for chromium and copper, where the D5 and D10 configurations of the M positive ions are disrupted. क्यों? क्योंकि ये stable है, ये half filled configurations है. With considerable loss of exchange energy, the value for zinc is correspondingly low as the ionization consists of the removal of an electron, which allows the production of the stable D10 configuration. इसमें होता है ना D10 S2, तो S2 निकालेंगे, it'll become stable. The trend in the third ionization enthalpy is not complicated by the 4s orbital factor and shows the greater difficulty of removing an electron from the D5 and D10. मैंगनीज और जिंक के केस में superimposed upon the general increasing trend. इसमें कुछ उतना रॉकेट साइंस ही नहीं है, इट्स जस्ट बेसिक्स कि हाफ फिल्ड होगा तो स्टेबल होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इवेंचुअली मुश्किल हो जाता है. In general, the third ionization enthalpies are quite high and there's a marked break between the values of Mn plus 2 and Fe plus 2. Also, the high values for copper, nickel and zinc indicate why it is difficult to obtain oxidation state greater than 2 for these elements. अब oxidation states देखेंगे बहुत सारी. One of the notable features of a transition element is the great variety of oxidation states it may show in its compounds. अब इसकी क्या variety है दिखाएगा oxidation states की, वो बहुत important feature होता है transition elements का. अब scandium और zinc को आप इस category से ही निकालें. scandium का एक होता है that is +3, zinc का एक होता है that is +2. हर जगह ये इन्हीं oxidation states के according react करेंगे. उसके बाद बाकियों में manganese में you can see maximum number of oxidation states over here, right? All right. The elements which give the greatest number of oxidation states occur in or near the middle of the series. Manganese, for example, exhibits all the oxidation states from +2 to +7. The lesser number of oxidation states at the extreme ends stems from either too few electrons to lose or share, or too many d electrons, hence fewer orbitals available in which to share electrons with others. या तो बहुत ज़्यादा electrons है तो फिर ऑर्बिटल है नहीं खाली जिसमें शेयर करेंगे, या फिर बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स है जिनको वो लूज या शेयर कर सकते हैं. Thus early in the series, scandium जो मैंने दिखाया is virtually unknown and titanium is more stable than this. अब ये oxidation states बोलते हैं. At the other end, the only oxidation state of zinc is +2. No d electrons are involved. The maximum, क्योंकि वो D10 configuration है, the maximum oxidation states of reasonable stability correspond in value to the sum of the s and d electrons up to manganese.
all right, followed by a rather abrupt decrease in stability of higher oxidation state, so that the typical species to follow are these. The variability of oxidation states, a characteristic of transition elements, like I told you already, arises out of incomplete filling of d orbitals, ठीक, in such a way that their oxidation states differ from each other by unity. तो ऐसा है कि जो ये various oxidation states है, इनके डी ऑर्बिटल्स की इनकम्प्लीट फिलिंग होगी और ऑक्सीडेशन नंबर्स जो है वो एक से डिफर करेंगे. दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट विद द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स नॉर्मली डिफर बाय यूनिट ऑफ 2. यहाँ आप देखेंगे जैसे यहाँ पे इन्हें दिया है कॉपर 1 कॉपर 2, कोबाल्ट 2, कोबाल्ट 3, तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1, लेकिन बाकियों में देयर इज यूजुअली अ डिफरेंस ऑफ 2. एन इंटरेस्टिंग फीचर इन द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज नोटिस्ड अमंग द group 4 through 10. Although in the P block, the lower oxidation states are favored by the heavier members due to inert pair effect. That's another effect that we have done. The opposite is true in the groups of D block. For example, in group 6, molybdenum और यहाँ पे दिया हुआ है are found to be more stable than this. Thus, chromium in the form of dichromate in acidic medium is a strong oxidizing agent, whereas these are not. अब इसका क्या reason है? क्रोमियम इसीलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा क्योंकि वो खुद को रिड्यूस करना चाहेगा, यानी वो खुद उतना स्टेबल नहीं है. तो जो कम स्टेबल होगा, ज़्यादा अनस्टेबल होगा, दिल हैव अ ग्रेटर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, एज अ रिजल्ट रिड्यूस्ड, एंड एज अ रिजल्ट दिल एक्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होता है जिसकी खुद की रिडक्शन होती है. लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर फाउंड व्हेन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैज लिगेंड्स. ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का है, केपेबल ऑफ पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर एडिशन टू द सिग्मा बॉन्डिंग. फॉर एग्जांपल इन NiCO4 FeCO5, the oxidation state of nickel and iron is 0. अब यहाँ पे है trends in M2+/M standard electrode potentials, यानी जो हमारे reduction potentials हैं हम उनको देखने वाले हैं अभी. Table 8.4 contains the thermochemical parameters related to the transformation of the solid metal atoms to M2+ ions in solution and the standard electrode potentials. तो electrode potential दिया है, observed value और calculated value दिया हुआ है with two different scales. The observed values of E0 and those calculated are compared. The unique behavior of copper having a positive E0 accounts for its inability to liberate hydrogen from acids. हम electrochemical series में देखते हैं copper जो है hydrogen से ऊपर आता है तो उसको replace नहीं कर सकता वो electrochemical series में. Only oxidizing acids say nitric and hot concentrated sulfuric acid react with copper, the acids being reduced. The high energy to transform copper to Cu2+ is not balanced by its hydration enthalpy. ठीक है, उसके लिए hydration energy का भी you have to have a good amount of hydration energy to basically convert it into Cu2+. The general trend towards less negative electrode potential values across the series is related to the general increase in the sum of the first and second ionization enthalpies. It is interesting to note that the value of E0 for Mn and iron zinc are most negative than expected from the trend. तो यहाँ पे क्या हो रहा है basically जो हमारे electrode potentials है वो कम होते जा रहे हैं जब हम अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं. व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? इट इज ओनली बिकॉज जब हम आगे आगे जा रहे हैं तो सम ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पीज है फर्स्ट सेकंड, बिकॉज हम M+2 पे जा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा है. ऑलराइट, देयर इज एन इंक्रीज इन दैट. एज अ रिजल्ट जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स है वो कम हो रहे हैं. सो इट मीन्स इवेंचुअली उनमें उतना टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन लूज करने का. सो दिस इज गिवन सम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज. Stability of the half filled of manganese, completely filled of zinc. इसीलिए इनके जो E0 values है हमने ऊपर ही देखा in this line only. It said that just a second. Alright, it said that it is interesting to note that the value of E0 for manganese, nickel and zinc are more negative than expected from the trend. बहुत ज़्यादा negative values है और ये इसीलिए हैं because इनके आप देख सकते हैं इनके अंदर जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशंस है वो स्टेबल है, इसीलिए दे आर रेडी टू गिव इलेक्ट्रॉन्स एनी टाइम. नाउ ट्रेंड्स इन M3+ to M+2. ठीक है, अब सेकंड से थर्ड पे जाना है. थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी देखेंगे. एन एग्जामिनेशन ऑफ द E0 वैल्यूज शोज द वेरिंग ट्रेंड्स. लो वैल्यू फॉर स्कैंडियम रिफ्लेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ Sc+3.
which has a noble gas configuration. The highest value for zinc is due to the removal of an electron from the stable D10. अब हम क्या देखेंगे, जो हमारे पास स्कैंडियम Sc+3 उसका वैल्यू बहुत कम है, इसका मतलब वो बहुत स्टेबल है, नेगेटिव वैल्यू जो है वो कम है, और यहाँ पे D10 में इट हैज़ अ ह्यूज नेगेटिव वैल्यू. वाई? बिकॉज हम D10 कॉन्फिगरेशन, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को डिस्टर्ब करें. द कंपेरेटिवली हाई वैल्यू फॉर मैंगनीज shows that this is particularly stable, whereas comparatively low value of iron shows the extra stability of this. The comparatively low value for voltage is related to the stability. I'm so sorry, this is vanadium, is related to the stability of vanadium plus 2 half filled. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगेन आपको देखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस में यू हैव टू सी हमारे पास कहाँ पे फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, कहाँ पे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, और कहाँ पे हम थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट लगा के कहाँ पे हमें स्टेबिलिटी मिलेगी या कहाँ पे हमें अनस्टेबल कॉन्फिगरेशंस मिलेगा. दैट्स व्हाट इज ट्राइंग टू से. ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स shows the stable halides of the 3D series. You can see यहाँ पे 3D हमारे, you have to remember this. यहाँ पे दिए गए हैं halides, इसके stable halides. तो सारे halides नहीं बनते. Usually जो higher oxidation states होते हैं they prefer fluorides. Alright, the highest oxidation numbers are achieved in titanium tetrahalides. ठीक है, vanadium pentafluoride, इसी तरह chromium का दिया. The +7 state for manganese is not representing it in simple halides but MnO3F is known. ठीक है, normally तो आप +7 oxidation state manganese में नहीं देखते, लेकिन oxide लाएंगे तो then you can see. And beyond manganese, no metal has a trihalide except FeX3 and COF3. The ability of fluorine to stabilize the highest oxidation state is due to either higher lattice energy, as in the case of COF3, or higher bond enthalpy in terms for the higher covalent compounds. तो क्या कह रहा है बेसिकली, हम देख रहे हैं higher oxidation states are stabilized by fluorides only. there's a reason, या तो हमारी lattice energy बहुत ज़्यादा है, बहुत स्टेबिलिटी हमारा कंपाउंड बन रहा है हमारा इवेंचुअली जो फ्लोराइड है, या फिर जो कोवलेंट कंपाउंड्स है उनकी बॉन्ड एंथैल्पी भी ज़्यादा है. ऑल्दो V इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय VF5. हाँ, यहाँ पे हम देखेंगे नीचे over here. Yes, इसका जो fifth oxidation state दिया हुआ है, however undergo hydrolysis to give oxohalides. ठीक, तो X2 will come out, VOX3 will be there. This is on hydrolysis. Another feature of fluorides is their instability in the low oxidation states. तो oxidation states अगर high है तो fluorides stable होंगे, low है तो fluorides will be unstable. And the same applies to copper halides. On the other hand, all Cu2 halides are known except the iodide. In this case, Cu2 plus oxidizes I negative to I2. इसमें क्या होता है, हमारा सीधा आयोडीन बाहर आ जाता है, तो हम कॉपर का हेलाइड नहीं देख पाते. However, many copper compounds are unstable in aqueous solution and undergo disproportionation, यानी redox होगा. ठीक है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी एक ही एलिमेंट का होने वाला है. The stability of Cu2 positive rather than Cu positive क्यों होता है, इज ड्यू टू द मच मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Cu2 पॉजिटिव दैन Cu+. मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी जितना ज़्यादा है उतना स्टेबिलिटी ज़्यादा है. द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन to stabilize the highest oxidation state is demonstrated in the oxides. अब ऑक्सीजन जो है अगेन फ्लोरीन की तरह वो स्टेबलाइज करेगा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स को. हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन द ऑक्साइड्स coincides with the group number and is attained in Sc2O3 to Mn2O7. Beyond group 7, no higher oxides of iron above Fe2O3 are known, although ferrates are formed in alkaline media, but they readily decompose to Fe2O3 and oxygen. Besides the oxides, oxocations stabilize vanadium as VO2 plus. And all of this, the ability of oxygen to stabilize these high oxidation states exceeds that of fluorine. Thus, the highest manganese fluoride is MnF4, whereas the highest oxide is Mn2O7. ठीक है, अब ऑक्सीजन जो है high oxidation states को stabilize करता है even more than what fluorine does. As a result, MnF4 is not possible, but MnF4 will be the highest state, whereas oxygen के केस में Mn2O7 तक भी जाएगा. ठीक, the ability of oxygen to form multiple bonds to metals explains its superiority in the covalent oxide Mn2O7. Each manganese is tetrahedrally around by oxygens including MnO, Mn bridge. The tetrahedral ions are known for these all. यहाँ पे ठीक, that's what it's trying to say कि oxides का stability towards the higher oxidation states is even more than what fluorides do. Alright, and these are all the oxidation states possible in the transition elements. हम scandium और zinc का हमेशा एक ही लेते हैं, we know it. zinc का 2 आएगा, scandium का 3 आएगा, right? और फिर oxygen के साथ criss cross करा के valencies, fine. और यहाँ पे manganese में even 7 वाला will be possible. ठीक है, stability of the oxide.
Now we have chemical reactivity and electrode potential values. Transition metals vary widely in their chemical reactivity. Many of them are sufficiently electropositive to dissolve in mineral acids, although a few are noble, that is, they are unaffected by single acids. तो वही है कि रिएक्टिविटी में भी वो डिफरेंस दिखाएंगे, कुछ अच्छे खासे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं तो वो अच्छी तरीके से रिएक्ट करेंगे मिनरल एसिड्स में, और लेकिन कुछ जो होते हैं वो मोस्टली इनर्ट रहते हैं. द मेटल्स ऑफ द फर्स्ट सीरीज जो हमारा 3D सीरीज है, विद द एक्सेप्शन ऑफ कॉपर, आर रिलेटिवली मोर रिएक्टिव एंड आर ऑक्सीडाइज्ड बाय 1 मोलर हाइड्रोजन. Though the actual rate at which these metals react with oxidizing agents like hydrogen ion is sometimes slow. For example, titanium and vanadium in practice are passive to dilute non-oxidizing acids at room temperature. The E0 values for M2 plus M indicate a decreasing tendency to form divalent cations across the series. This general trend towards less negative electrode potential values is related to the increase in the sum of the first and second ionization enthalpies. It is interesting to note that the E0 values for manganese, nickel and zinc are more negative than expected from the general trend, whereas the stabilities of half-filled D subshell in manganese and completely filled in zinc are related to their E0 values. For nickel, value is related to the highest negative enthalpy for hydration. तो अक्रॉस द पीरियड जो है सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाता है. इसकी वजह से जो उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स है वो लेस नेगेटिव आते हैं. नाउ दे डोंट हैव अ ग्रेटर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज नाउ, तो इसीलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स या जो ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर, दे आर नॉन रिएक्टिव टू देम. An examination of the E0 values for the redox couple shows that Mn plus 3 and Cu plus 3 ions are the strongest reducing oxidizing agents in aqueous solutions. The iron, titanium, vanadium, chromium, strong reducing agents and will liberate hydrogen from a dilute acid. I think आप ये reducing agents में भी देख चुके हैं, oxidizing agents में भी. What makes a substance a good reducing agent or a good oxidizing agent is उसका electrode potential का क्या value आ रहा है. ठीक है, अगर वो एक अच्छा oxidizing agent है यानी उसकी खुद की बहुत अच्छी tendency है to get reduced, so it has lower, more negative value of reduction potential. Now, magnetic properties. When a magnetic field is applied to substances, mainly two types of magnetic behavior are observed: diamagnetism and paramagnetism. Diamagnetic substances are repelled by the applied field while the paramagnetic substances are attracted. Very easy. Magnetic field लगाया, जो substances repel हो जाएंगे opposite to the magnetic field वो diamagnetic होंगे, और जो attract हो जाएंगे वो paramagnetic होंगे, और जो strongly attract होंगे वो ferromagnetic होंगे. In fact, ferromagnetism is an extreme form of paramagnetism. Many of the transition metal ions are paramagnetic. So, paramagnetism arises from the presence of unpaired electrons, each such electron having a magnetic moment associated with its spin angular momentum and orbital angular momentum. तो दो angular momentum होते हैं हर एक electron के, ठीक है, एक spin angular momentum होता है और एक orbital angular momentum होता है, और उनके साथ एक magnetic moment associate होता है क्योंकि electron keeps on revolving around the nucleus. तो उन unpaired electron की theory के basis पे हम paramagnetism को explain करते हैं. So for the compounds of the first series of transition metals, the contribution of the orbital angular momentum is effectively quenched and hence is of no significance. For these, the magnetic moment is determined by the number of unpaired electrons and is calculated by using the spin-only formula. यानी हम सिर्फ स्पिन और ऑर्बिटल मोमेंटम जो है स्पिन एंगुलर मोमेंटम ही कंसिडर करते हैं, और इसलिए हम इसको स्पिन ओनली फॉर्मूला बोलते हैं. तो इसमें म्यू विच इज द मैग्नेटिक मोमेंट इज n into n+2, इस सारे को रूट में डाला हुआ है. When n is the number of unpaired electrons and mu is the magnetic moment in units of Bohr magneton. A single unpaired electron has a magnetic moment of 1.73 Bohr magnetons. एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट. अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यही था ट्रांजिशन एलिमेंट्स का. द मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. Thus the observed magnetic moment gives a useful indication about the number of unpaired electrons present in the atom. आप फॉर्मूला से भी देख सकते हैं molecular ion. The magnetic moments calculated from the spin only formula and those derived experimentally for some ions are given in the table. You can see the experimental data later on. Alright, now formation of colored ions, another property of the transition metals. हमने already देखा ये transition elements है, इनमें जो electrons है वो transition दिखाते हैं s orbital से d में, फिर बहुत सारे d orbitals में आपस में, और जब भी electron excite करता है तो we know some sort of energy is released in the form of radiations, और उसके wavelength पे depend करता है कि वो कौन सा color emit करेगा. Basically वही इस paragraph में लिखा है. Let's see what the book has to say.
When an electron from a lower energy d orbital is excited to a higher energy d orbital, the energy of excitation corresponds to the frequency of light absorbed. This frequency generally lies in the visible region. The color observed corresponds to the complementary color of the light absorbed. The frequency of the light absorbed is determined by the nature of the ligand. In aqueous solutions where water molecules are the ligands, the colors of the ions observed are listed over here. Aqueous solutions में अब ligands जो हम देखते हैं coordination chemistry में जो हमारे transition elements बनाते हैं coordination कंपाउंड्स, तो उसके साथ जब लिगेंड अटैच होगा उस पर भी डिपेंड करता है कि कलर कौन सा आएगा. Few colored solutions of d block elements are illustrated over here in the table. Again you can go through the table. ठीक है, स्कैंडियम का एग्जांपल दिया है कलरलेस, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दिए हुए हैं इन द d ऑर्बिटल्स, और यहाँ पे हमारे d block elements दिए हुए हैं, और यहाँ पे वो कौन सा कलर जो है emit करे हैं. Now formation of complex compounds, again you'll do this in depth in coordination compounds. So it's just the they've just touched it over here. Complex compounds are those in which the metal ions bind a number of anions or neutral molecules. ठीक है, metal ion है positive है, उसको balance करने के लिए anion या neutral molecule आएगा, and they'll give out complex species with characteristic properties. So you have these certain examples, पहले भी देखे होंगे कभी. Complex compounds is dealt with in the next unit, like I said. So transition metals form a large number of complex compounds due to the comparatively smaller sizes of the metal ions, their ionic charges, and the availability of d orbitals for bond formation, which we'll be seeing right away after this lesson. Catalytic properties now. This transition metal, again based on the same property of having unpaired electrons which are again free to move about, transition वगैरह कर लेते हैं, इसी बेसिस पे हमारे पास कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है. तो अगर आपने इसको किसी रिएक्शन में डाला किसी भी रिएक्टेंट के साथ, तो ये खुद को जो है अपना जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज करता रहेगा और इवेंचुअली रिएक्शन जो है वो कैटलाइज होगी. लेट्स सी द transition metals and their compounds are known for their catalytic activity. This activity is ascribed to their ability to adopt multiple oxidation states and to form complexes. Vanadium oxide in contact process, finely divided iron in Haber's process, nickel in catalytic hydrogenation. हमने सारे reactions किए हैं पहले, are some of the examples. Catalysts at a solid surface involve the formation of bonds between reactant and atoms of the surface of the catalyst. ठीक है, first row transition metals utilize 3d and 4s electrons for bonding. This has the effect of increasing the concentration of the reactants at the catalyst surface and also weakening of the bonds in the reacting molecules. The activation energy is lowering. Also because the transition metal ions can change their oxidation states, they become more effective as catalysts. For example, iron third catalyzes the reaction between iodide and persulfate ions. Now the explanation for this is basically transition metals, they form unstable intermediates with their reactants as they have a tendency to exhibit variable valency और वो complexes बनाते हैं. तो जो unstable intermediate वो बनाते हैं with the reactants, they will provide an alternative path having a lower activation energy for the reaction. और जब activation energy कम हो जाती है alternate path से, तो हमें पता है कि catalytic activity is shown. So this lowering of activation energy will increase the rate of the reaction eventually. So यहाँ पे भी एक explanation दिया है for a catalytic reaction. Then we have formation of interstitial compounds. Interstitial compounds, very easy. Interstitial compounds are those which are formed when small atoms like, अब छोटे छोटे atoms लेंगे, hydrogen, carbon, nitrogen, trapped inside the crystal lattices of the metals. हमने अभी देखा ना crystal lattice बनाते हैं क्योंकि ये metals है somewhere down the line, तो इसीलिए उनके बीच में जो voids होते हैं उधर ये fit हो जाते हैं, ये जो छोटे छोटे elements हैं. They're usually non-stoichiometric, neither typically ionic nor covalent. They say, you can say all of these, fine. इनकी पूरे तरीके से stoichiometry भी बराबर नहीं. The formulas quoted do not of course correspond to any normal oxidation state of the metal. Because of the nature of their composition, these compounds are referred to as interstitial compounds. The principal physical and chemical characteristics are they have high melting points higher than those of the pure metals क्योंकि अब और bonds बन रहे हैं voids में भी. They're very hard. Then we have retained metallic conductivity. ऐसा नहीं है कि हमारा कोई extra element आ गया तो उसने void fill किया तो conductivity खत्म. No, they will retain metallic conductivity and they're chemically inert. Now alloy formation. Alloy is very easy. Again, it's a blend of metals prepared by mixing the components. Components mix किए, blend बनाया, वही alloy है. Alloys may be homogeneous solid solutions in which the atoms of one metal are distributed randomly among the atoms of the other. Such alloys are formed by atoms with metallic radii that are within about 15% of each other. Because of similar radii and other characteristics of transition
transition metals. Alloys are readily formed by these metals. same size के होंगे, alloys easily बन जाएंगे, ठीक है, जिनका almost similar radius होता है. Homogeneous solid solutions भी हो सकते हैं, एक metal के बीच में दूसरा metal ऐसे ही spread कर दिया. The alloys so formed are hard and have often high melting points. Best known are ferrous alloys, हाँ, iron के जो बनाते हैं. Chromium, vanadium, tungsten, molybdenum, manganese are used for the production of a variety of steels and stainless steel. Alloys of transition metals with non-transition metals such as brass, bronze, we've already done this, copper, zinc is brass, copper, tin is bronze, are also of considerable industrial importance. They're all alloys. Now comes another important part, some important compounds of transition elements. अब ये transition elements कुछ बहुत important compounds बनाते हैं which can serve as good oxidizing agents, good reducing agents, which we'll be seeing consequently. Oxides and oxoanions of metals. These oxides are generally formed by the reaction of metals with oxygen at high temperatures. All the metals except scandium form MO oxides, ठीक है, which are ionic. क्योंकि वो स्कैंडियम का जो है वो Sc3O2 बनाता, Sc2O3 बनाता है, तो बाकी सारे MO टाइप बनाएंगे. The highest oxidation number in the oxides coincides with the group number and is attained in Sc2O3 to Mn2O7. Beyond group 7 no higher oxides, हमने ऊपर ऑलरेडी देखा हुआ है oxides के केस में. Besides the oxides, the oxocations stabilize vanadium as VO2+, V4 as VO2+, and Ti4 as TiO2+. तो obviously fluorides, oxides ये क्या करते हैं, higher oxidation states को क्या करते हैं, stabilize करते हैं. As the oxidation number of a metal increases, ionic character decreases. In the case of manganese, Mn2O7 is a covalent green oil. Even CrO3 and V2O5 have low melting points. In these higher oxides, the acidic character is predominant. Fine. Thus, Mn2O7 gives HMnO4, CrO3 gives H2CrO4. Why? Because इनका acidic character predominant होता है, तो ये ऐसे exist करते हैं. Dichromate, chromate, ये आपने सारे देखे हैं. V2O5 is however amphoteric, though mainly acidic, and it gives VO4 negative as well as VO2 plus salts. So V2O5 vanadium pentoxide can be considered as amphoteric. In vanadium, there's gradual change from the basic to less basic and to amphoteric. Dissolves in acids to give this salt. Similarly, V2O5 reacts with alkalis as well as acids. क्यों? क्योंकि amphoteric है, दोनों के साथ react करेगा. The well characterized CrO is basic, but Cr2O3 is amphoteric. तो बेसिकली जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगे उनका वो एसिडिक होंगे, लोअर वाले बेसिक होंगे, और जो बीच वाले इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स दे विल बी एम्फोटेरिक. देन वी हैव पोटेशियम डाइक्रोमेट. Potassium dichromate is a very important chemical used in leather industry and as an oxidant for preparation of many azo compounds. आपने already पढ़ा होगा इसके बारे में. I'm sure you must have heard about it. Dichromates are generally prepared from chromate, which in turn are obtained by the fusion of chromite ore with sodium or potassium carbonate in free access of air. The reaction with sodium carbonate occurs as follows. आपने क्या किया, आपने लिया पहले हमारा chromite ore, ठीक है, ore ले लिया, उसको sodium carbonate के साथ react करा in access of air. Then you got from here sodium chromate, हाँ, sodium chromate और बाकी Fe2O3 कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट्स मिले, बट मेनली आपको आपका सोडियम क्रोमेट मिला. इस सोडियम क्रोमेट को आपने एसिडिक मीडियम में डाल के हमारा सोडियम डाइक्रोमेट बना दिया, ठीक है, बिकॉज हमें डाइक्रोमेट चाहिए. येलो सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट इज फिल्टर्ड एंड एसिडिफाइड विद सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव अ सोल्यूशन form which from which orange sodium dichromate can be crystallized. Chromate is yellow, dichromate is orange. Sodium dichromate is more soluble than potassium dichromate. इसीलिए अब जो हमारा सोडियम डाइक्रोमेट है इसमें हम KCl मिलाएंगे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलेगा जो हमें चाहिए था. Is therefore prepared by the treating of the solution of sodium dichromate with potassium chloride. Orange crystals of potassium dichromate crystallize out. The chromate and dichromate are interconvertible in aqueous solution depending upon the pH of the solution. The oxidation state of chromium in chromate and dichromate is the same. Oxidation state भी same है और ये आपस में interconvertible भी होते हैं. This is chromate and this is dichromate. Structures of chromate and dichromate are shown. Chromate is tetrahedral, whereas the dichromate consists of two tetrahedral sharing one corner with this bond. ठीक है, ये हमारा इससे bridge bond angle of 126 degrees. Sodium and potassium dichromates are strong oxidizing agents. पढ़ा होगा इससे पहले. Sodium salts has a greater solubility in water and is extensively used as an oxidizing agent in organic chemistry. Potassium dichromate is used as a primary standard in volumetric analysis. In acidic solution, its oxidizing action can be represented as follows. ये आपका dichromate है, ठीक है, acidic solution में ये usually जो है अपना
oxidizing property दिखाता है, and you can see over here this has been oxidized. Thus acidified potassium dichromate and will oxidize iodides to iodine, sulfides to sulfur, tin second to tin 4, iron second to iron 3. So all of this will happen in presence of acidified potassium dichromate. The full ionic equation may be obtained by adding the half reaction for potassium dichromate to the half reaction for the reducing agent. तो ये हमारा full reaction जब हम लेंगे, हमारे पास एक reducing agent होगा, एक हमारे पास अपना potassium dichromate है, तो हम देख सकते हैं कि ये कैसे water बना रहा है. It's oxidizing it over here. Potassium permanganate खुद से is getting reduced obviously because अगर ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करा रहे हैं खुद रिड्यूस हो रहा है. पोटेशियम परमैंगनेट KMNO4 इसके बारे में भी सुना होगा आई एम श्योर. इज प्रिपेयर्ड बाय द फ्यूजन ऑफ MnO2 विद अ बेस मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एंड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KNO3. दिस प्रोड्यूसेस द डार्क ग्रीन K2MnO4 which disproportionates in a neutral or acidic solution to give the permanganate. तो पहले तो हमको ये मिलता है, बाद में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के बाद हमें न्यूट्रल या एसिडिक सोल्यूशन मिलेगा जिससे हमें फाइनली हमारा परमैंगनेट मिलता है. Commercially, it is prepared by the alkaline oxidative fusion of MnO2 followed by the electrolytic oxidation of manganate. तो हमारा ये ले लिया आपने, इसको आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऑक्सीडेशन कराया है इसका, and you got the manganate ion. अब जो मैग्नेट आयन है इसका इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कराया in alkaline solution only, and you got the permanganate ion. In the laboratory, a manganese ion salt is oxidized by peroxide disulfate to permanganate. पोटेशियम परमैंगनेट फॉर्म्स डार्क पर्पल, वेरी इंपॉर्टेंट. पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पे पर्पल से दिखाया है, मैंगनेट जो है वो ग्रीन होता है. द सॉल्ट इज ऑलराइट. पोटेशियम परमैंगनेट फॉर्म्स डार्क पर्पल क्रिस्टल्स व्हिच आर आइसोस्ट्रक्चरल विद दोज ऑफ KClO4, ठीक है, क्लोरेट. द सॉल्ट इज नॉट वेरी सॉल्युबल इन वाटर बट व्हेन हीटेड इट डिकम्पोजेस एट 513 Kelvin. Alright, it has two physical properties of considerable interest. Its intense color and weak temperature dependent paramagnetism, ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज है इसके. These can be explained by the use of molecular orbital theory which is beyond the present scope. The manganate and permanganate ions are tetrahedral, दोनों ही tetrahedral है. manganate green है, permanganate purple है. very easy, diagrammatically भी आप देख सकते हैं. The green manganate is paramagnetic. एक और चीज है कि ये जो है paramagnetic है with one unpaired electron, but the permanganate is diamagnetic. सारे electrons paired हैं. The pi bonding takes place by overlap of p orbitals of oxygen with d orbitals of manganese. Acidified permanganate solution oxidizes oxalates to carbon dioxide, ठीक है. तो इसी तरह इसका भी oxidizing property दिखाया हुआ है, how it can oxidize all of these. all right. Okay, the full reaction can be written by adding the half reaction, of course, जिसमें reducing agent, reducing और oxidation आप दोनों processes दिखाते हैं, उनको add करके आपको दो half reactions मिलती हैं. If we represent the reduction of permanganate to manganate, manganese dioxide and manganese salt by half reactions, you can see इसने reduce किया खुद को because ये oxidizing agent है. This is what all is happening over here. We can very well see that the hydrogen ion concentration of the solution plays an important part in influencing the reaction. Although many reactions can be understood by consideration of redox potential, kinetics of the reaction is also an important factor. Permanganate at this H ion concentration 1 should oxidize water, but in practice the reaction is extremely slow unless either manganese ions are present or the temperature is raised. A few important oxidizing reactions of KMNO4 are given. ठीक है, आयोडीन लिबरेटेड फ्रॉम पोटेशियम आयोडाइड. बेसिकली कुछ नहीं करना है, KMNO4 के ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज पे एग्जांपल्स दिए हुए इन्होंने, ठीक. Fe2+ which is green is converted to Fe3+ which is yellow. Yes, then we have ऑक्सिलेट आयन और ऑक्सैलिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड में ये जो है कन्वर्ट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ मैंगनेट परमैंगनेट आयंस. उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर से विच इज बीइंग प्रेसिपिटेटेड, ठीक है, ये यहाँ पे हमारा सल्फर. देन वी हैव सल्फ्यूरस एसिड और सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू अ सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड, वेरी इजी. नाइट्राइट इज ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रेट. NO2 नेगेटिव गेट्स कन्वर्टेड टू NO3 नेगेटिव इन न्यूट्रल ऑफ फेंटली अल्कलाइन सॉल्यूशंस. अब वहाँ पे कहाँ हम देखते हैं नोटेबल रिएक्शन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड टू आयोडेट, ठीक है. फिर थायोसल्फेट is oxidized almost quantitatively to sulfate. For manganese salt oxidized to MnO2. The presence of zinc sulfate or zinc oxide catalyzes the oxidation. All of these are oxidation reactions जिसमें oxidizing agent हमारा permanganate ion है. Permanganate titrations in presence of hydrochloric acid are unsatisfactory since HCl is oxidized to chlorine. Then we have the inner transition elements या जो हमारा F block है. All right.
The F block consists of two series, lanthanoids, the 14 elements following lanthanum, and actinoids, the 14 elements following actinium. Because lanthanum closely resembles the lanthanoids, it is usually included in any discussion of lanthanoids for which the general symbol Ln is often used. So lanthanum आता नहीं है lanthanoids में, but we can consider it to be under it only. Similarly, a discussion of the actinoids includes actinium besides the 14 elements constituting this series. Lanthanoids resemble one another more closely than do the members of ordinary transition elements in any series. They have only one stable oxidation state, and their chemistry provides an excellent opportunity to examine the effect of small changes in size and nuclear charge along a series of otherwise similar elements. The chemistry of the actinoid is, on the other hand, much more complicated. The complication arises partly owing to the occurrence of a wide range of oxidation states in these elements, and partly because their radioactivity creates special problems in their study. The two series will be considered separately here. तो अभी कह रहे हैं कि हम जो है लैंथेनाइड्स को इजीली स्टडी कर सकते हैं, वो हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बोलते भी हैं, एंड दे रियली हेल्पफुल इन एक्सपेरिमेंटेशन processes. But for actinoids you cannot say much about it. They're really complicated in a sense that their chemistry is complicated. अब हम देखते हैं the lanthanoids. All right, so here we go. The name symbols electronic configurations of atomic and some ionic states, and atomic and ionic radii of lanthanum and lanthanoids are given over here. Again, ये table है जो आपने करना है. Electronic configuration. May be noted that atoms of these elements have electronic configuration 6s2 with common but with variable occupancy of 4f level. However, the electronic configurations of all the tri-positive ions, the most stable oxidation state of all the lanthanoids, are of the form 4f raised power n. यहाँ पे n का ही मतलब 1 से 14 तक रेंज करेगा with increasing atomic number. तो ऐसे हम लिखते हैं. All right. Atomic sizes and ionic sizes. The overall decrease in atomic and ionic radii from lanthanum to lutetium, ठीक है, जिसको lanthanoid contraction बोलते हैं, is a unique feature in the chemistry of the lanthanoids. So lanthanoid contraction हमने इससे पहले भी देखा. It has far-reaching consequences in the chemistry of the third transition series of the elements. Decrease in atomic radii derived from the structures of metals is not quite regular as it is regular in M3 plus ions. This contraction is of course similar to that observed in an ordinary transition series and is attributed to the same cause, the imperfect shielding of one electron by another in the same subshell. However, the shielding of one 4f electron by another is less than one d electron by another with the increase in nuclear charge along the series. There is fairly regular decrease in the sizes with increasing atomic number. जितना जितना atomic number बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा जो shielding है वो poor होती जाएगी, तो there will be a regular decrease in the sizes because f electron का जो shielding है it's really poor. You can see ऐसे नीचे dip कर रहा है graph. Why? Because जो हमारे रेडियस है वो इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर के साथ बढ़ नहीं रहे हैं, वो कम हो रहे हैं. द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ द कंट्रैक्शन ऑफ द lanthanoid series known as lanthanoid contraction causes the radii of the members of the third transition series to be very similar to those of the corresponding members of the second series. The almost identical radii of zirconium and HF, a consequence of the lanthanoid contraction, account for their occurrence together in nature and for the difficulty faced in their separation. तो अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, 159 पिकोमीटर 160 पिकोमीटर कोई उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है. तो जिरकोनियम और जो हैफनियम है वो इतना सिमिलरली एग्जिस्ट करते हैं कि हम उनको सेपरेट भी नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ देयर कंपेरेबल रेडियाई. ऑक्सीडेशन स्टेट्स अगेन इन द लैंथेनॉइड्स La and Ln, ठीक है, compounds are predominant species, second or third oxidation states. However, occasionally +2, +4 ions in solution or in solid compounds are also obtained. The irregularity as an ionization enthalpies arises mainly from the extra stability of the empty half-filled or fully filled F subshell. ये हम देखते हैं already. Thus, the formation of Ce4 is favored by its noble gas configuration, but it's a strong oxidant reverting to the common +3 state. The अच्छा ऑक्सीडेंट है बहुत स्ट्रॉन्ग, तो अंडरगो ऑक्सीडाइजेशन, वरना इसका फोर्थ होता है, तो ऑक्सीडेशन के बाद ये +3 स्टेट बनेंगे, लूज एन इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है सेलेनियम का इतना, ठीक है, द रिडक्शन पोटेंशियल विच सजेस्ट दैट इट कैन ऑक्सीडाइज वाटर. However, the reaction rate is very slow and hence selenium 4 is a good analytical reagent. Pr, NdTb, dy also exhibit the +4 state but only in the oxides. अब यहाँ पे MO2 EU +2 is formed by losing the two S electrons and its F7 configuration accounts for the formation of this ion. However, EU2 plus is a strong reducing agent, changing to the common +3 state. Gain of electron, then it will be an
Yes, it will be losing an electron, it will undergo oxidation and it will be a reducing agent. Similarly, YB plus 2, which has F14 configuration, is a reductant. TB4 has half-filled F orbitals and is an oxidant. Although half-filled है, fully filled है, yet they can act as reducing agents or oxidizing agents. They can undergo reduction or oxidation. The behavior of samarium is very much like europium, exhibiting both +2 and +3 oxidation states. तो यहाँ पे वो जो सारा पैराग्राफ में लिखा हुआ था कि किसका किससे ज़्यादा है, किसका कम है, बिकॉज ऑफ व्हाट रीजंस, ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है. Now we have general characteristics. All the lanthanoids are silvery white soft metals and tarnish rapidly in air. The hardness increases with increasing atomic numbers, samarium being steel hard. The melting points range between 1000 to 1200 Kelvin, but samarium melts at 1623. They have typical metallic structure and are good conductors of heat and electricity. Density and other properties change smoothly except for EU and YB and occasionally for SM and TM. तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं वैसे तो कुछ डिफरेंट नहीं है, मेटल्स की तरह है, सिल्वरी वाइट है, टार्निश जल्दी हो जाते हैं, हार्डनेस बढ़ती है जितना एटॉमिक नंबर बढ़ता है, मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत हाई है, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. Many trivalent lanthanoid ions are colored both in the solid state and in the aqueous solutions. Color of these may be attributed to the presence of F electrons. जहां आपने unpaired electron देखा वहां आप color भी देखेंगे. Neither La or nor Lu ion shows any color, but the rest do so. ठीक है, लैंथेनम ल्यूटियम नहीं दिखाएंगे, बाकी दिखाएंगे. However, absorption bands are narrow, probably because of the excitation within the F level. Lanthanoid ions are all the F0 type, ठीक है, and the F14 type are all paramagnetic. The paramagnetism rises to maximum in neodymium. Maximum paramagnetism, neodymium. The first ionization enthalpies of the lanthanoids are around 600, the second about 12, comparable with those of calcium. A detailed discussion of the variation of the third ionization enthalpy indicates that the exchange enthalpy considerations, as in 3d orbitals of the first transition series, appear to impart a certain degree of stability to empty, half-filled and completely filled orbitals F level. This is indicated from the abnormally low value of the third ionization enthalpy of lanthanum, gadolinium and lutetium. तो यहाँ पे क्या, lutetium, यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, ये जो तीन आपके हैं इनकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी अब नॉर्मली बहुत ज़्यादा कम है, और वो कम है इसका मतलब तीसरी आयनाइजेशन एंथैल्पी पे तीसरा इलेक्ट्रॉन लूज करने पे वो बहुत ज़्यादा स्टेबल बन रहे हैं. ऑफ कोर्स दिस अकाउंट्स टू द एम्प्टी हाफ फिल्ड fully filled orbitals that we've already seen. In the chemical behavior in general, the earlier members of the series are quite reactive, similar to calcium, but with increasing atomic number, they behave more like aluminium. Values of E0 for the half reaction are given. Again, this is of course a small variation. The metals combine with hydrogen when gently heated in the gas. The carbides, ये सारे carbides are formed when the metals are heated with carbon. They liberate hydrogen from dilute acids and burn halogens to form halides. They form oxides also and hydroxides as well. ठीक है, ये दिया हुआ है, इनने lanthanum का यहाँ पे दिया हुआ है, Ln का सारा acid के साथ क्या करेगा, oxygen के साथ sulfur, nitrogen and carbon and even water. Chemical reactions of the lanthanoids. Easily you can remember it from this diagram जो यहाँ सारे paragraph में लिखा है. Hydroxides are definite compounds, not just hydrated oxides. They're basic like alkaline earth metals and hydroxides. Their general reactions are depicted. अच्छा. The best single use of the lanthanoids is for the production of alloy steels for plates and pipes. A well-known alloy is mish metal, ये बहुत important है, which consists of lanthanoid metal and iron, ठीक है, and traces of all of these. Good deal of mish metal is used in magnesium based alloy to produce bullets, shell and lighter flint. Mixed oxides of lanthanoids are employed as catalyst in petroleum cracking. Some individual lanthanum oxides are used as phosphors in television screens and similar fluorescing surfaces. The actinoids include the 14 elements from TH2LR, the names, symbols and the properties, ठीक है. थोरियम से इन एक्टिनियम भी क्यों इन्वॉल्व किया, क्योंकि इसके प्रॉपर्टीज भी सिमिलर है, बट दैट डजंट मीन कि एक्टिनियम ही एक्टिनोइड सीरीज को स्टार्ट करता है, नो. एंटिल लॉरेंशियम यू कैन सी, ठीक है. द एक्टिनोइड्स आर रेडियो एक्टिव, इसलिए हम उनके बारे में स्टडी नहीं कर पाते. अर्लियर मेंबर्स ऑफ रिलेटिवली लॉन्ग हाफ लाइफ, द लैटर वंस हाफ लाइफ तभी आएगा जब रेडियो एक्टिविटी होगी. ऑलराइट, वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम अ डे टू 3 minutes for lawrencium. The latter members could be prepared only in nanogram quantities. These facts render their study more difficult. Electronic configuration. All the actinoids are believed to have the electronic configuration 7s2, सबका एक ही जैसा, and variable occupancy of 5s in 60 subshells. The 14 electrons are formally added to 5f, though not in thorium, but from
Pa onwards, the 5f orbitals are complete at element 103. The irregularities in the electronic configuration of the actinoids, like those in the lanthanoids, are related to the stability of F0, F7, F14. Half filled in case of F is 7, full filled is 14, या empty orbital. Occupancies of the 5f orbital, thus the configuration of AM, CM are these and these. ठीक है, जो हम पहले भी करते थे. Although the 5f orbitals resemble the 4f in their angular part of the wave function, they are not as varied as 4f orbitals, and hence 5f electrons can participate in bonding to a far greater extent. तो 4f से ज़्यादा 5f will participate in bonding. Ion excites, यहाँ usually जो आपका f block है वहाँ से ज़्यादा सवाल बनते नहीं है नीट वगैरह के लिए. स्टिल यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट ये जो छोटी छोटी लाइंस होती हैं जहाँ से फिर वो लोग सवाल बनाते हैं. द जनरल ट्रेंड इन lanthanoids इज ऑब्जर्वेबल इन द actinoids एज वेल. दिस ग्रेजुअल डिक्रीज इन द साइज, ठीक है, अक्रॉस द सीरीज. जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा साइज कम हो जाएगा. दिस मे बी रिफर्ड टू एज एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन. क्यों? कंट्रैक्शन इज हाउएवर ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट इन दिस सीरीज, रिजल्टिंग फ्रॉम पुअर शील्डिंग बाय 5f इलेक्ट्रॉन्स. बहुत ही पुअर शील्डिंग है तो कंट्रैक्शन जो है वो दैट्स ग्रेटर. There's a greater range of oxidation states, which is in part attributed to the fact that the 5f, 6d and 7s are of comparable energies. जब comparable energies के shells आपस में आते हैं, हमारे पास variable oxidation states come into play. The known oxidation states of actinoids are given over here. Alright, the actinoids show in general +3 oxidation state. The elements in the first half of the series frequently exhibit higher oxidation states. In general तो +3 होता है. For example, the maximum oxidation state increased from +4 in thorium to +5, +6, +7 in Pa, U and Np, but decrease in succeeding elements. The actinoids resemble the lanthanoids in having more compounds in +3 states than in the +4 state. However, the +3, +4 ions tend to hydrolyze because the distribution of oxidation states among the actinoids is so uneven and so different for the former and later elements. It is unsatisfactory to review their chemistry in terms of oxidation states. बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स में वेरिएशन आता है. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपैरिजन. एक्टिनॉइड मेटल्स आर ऑल सिल्वरी इन अपीयरेंस, ठीक है, लैंथेनॉइड्स की तरह, बट डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स. स्ट्रक्चरल वेरिएबिलिटीज ऑब्टेन ड्यू टू इरेगुलरिटीज इन मेटालिक रेडियाई व्हिच आर फार ग्रेटर दैन इन लैंथेनॉइड्स. लैंथेनॉइड्स में इतना इरेगुलरिटी नहीं है जितना हम एक्टिनॉइड्स में देखते हैं. एक्टिनॉइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइडेड. The action of boiling water on them, for example, gives a mixture of oxide and hydride, and combination with most non-metals takes place at moderate temperatures. HCl attacks all metals, but most are slightly affected by nitric acid owing to the formation of protective oxide layers. Alkalis have no action. तो बहुत ज़्यादा reactive होते हैं actinoids, ठीक है, especially जब आप उनको divide करते हैं, and उनका जो वाटर का जो boiling water if you pour on them, it will give a mixture of the oxide and hydride, ठीक है. With most of the actinoids you can see that will happen. The magnetic properties of the actinoids are more complex than those of the lanthanoids, although the variation in the magnetic susceptibility of the actinoids with the number of unpaired 5f electrons is roughly parallel to the corresponding result for the lanthanoids. The latter have higher values. अब magnetic properties में क्या हो रहा है, जो magnetic properties है actinoids की, it's more complex than that of the lanthanoids. अब जो magnetic susceptibility है वो बहुत ज़्यादा vary कर रही है. You can say it's a term related to magnetism, ठीक है, with the number of unpaired 5f electrons. It is evident from the behavior of the actinoids that the ionization enthalpies of the early actinoids, though not accurately known, but are lower than for the early lanthanoids, ठीक है. Ionization enthalpy क्या बन जाता है इनका actinoids का, lower than the lanthanoids. This is quite reasonable since it's to be expected that when 5f orbitals are beginning to be occupied, they'll penetrate less into the inner core of electrons. The 5f electrons will therefore be more effectively shielded from the nuclear charge than the 4f electrons. जो 5f electrons होंगे वो ज़्यादा जो है ज़्यादा अच्छे से shielding करेंगे, fine, than the 4f electrons, fine, from the nuclear charge. Because the outer electrons are less firmly held, they are available for bonding in the actinoids. A comparison for the actinoids with the lanthanoids with respect to different characteristics are discussed above reveals that behavior similar to that of the lanthanoids is not evident until the second half of the actinoid series. However, even with the early actinoids resemble than the lanthanoids in
showing close similarities with each other and in gradual variation in properties which do not entail change in oxidation state. The lanthanoid and actinoid contractions have extended effects on the sizes and therefore the properties of the elements succeeding them in their respective periods. The lanthanoid contraction is more important because the chemistry of elements succeeding the actinoids are much less known at the present time. तो यहाँ पे हम देखते हैं उनमें सिमिलैरिटीज है, ठीक है, अंटिल द सेकेंड हाफ ऑफ द एक्टिनॉइड सीरीज. और इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनन जो एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन है, वो आप इवन अवे फ्रॉम दिस चैप्टर यू कैन सी दैट इवन इन पी ब्लॉक इन एवरी नेक्स्ट चैप्टर दैट यू विल डिस्कस प्रॉब्ली इन फ्यूचर. तो हर एक में हम ये जो है इनके वाले इफेक्ट्स देखते हैं बिकॉज they have a huge impact on the sizes, on the properties of the elements succeeding them in the periodic table. So that's it for this video, I believe, and we just, I guess, have a small paragraph over here which will give us the applications of the D and F block. Iron and steels are the most important construction materials, we know it. Their production is based on the reduction of iron oxides, removal of impurities, addition of carbon and alloying metals such as chromium, manganese and nickel. Such compounds are manufactured for special purposes such as TiO for the pigment industry, MnO2 for use in dry battery cells. The battery industry also requires zinc and nickel or cadmium. The elements of group 11 are still worthy of being called the coinage metals. Group 11 को coinage बोलते हैं, although gold and silver are restricted to collection items and the contemporary UK copper coins are copper coated steel. The silver UK coins are a copper nickel alloy. Many of the metals or their compounds are essentially catalysts in the chemical industry. Vanadium pentoxide catalyzes the oxidation of sulfur dioxide in the manufacture of sulfuric acid. TiCl4 with AlCH3 whole 3 forms the basis of the Ziegler catalyst used to manufacture polythene. हमने किया है Ziegler nata and everything in polymers. You'll do it. Iron catalysts are used in the Haber process for the production of ammonia from N2 or H2 mixtures. Nickel catalysts enable the hydrogenation of fats to proceed. In the Walker process, the ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन टू एथेनॉल इज कैटलाइज्ड बाय पीडीसीएल. तो ये सारे आप ऑर्गेनिक में देखते हैं, जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं ट्रांजिशन मेटल्स ही उनके कैटलिस्ट होते हैं. निकल कॉम्प्लेक्सेस आर यूजफुल इन द पॉलिमराइजेशन ऑफ एल्काइंस एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज बेंजीन. द फोटोग्राफिक इंडस्ट्री relies on the special light sensitive properties of AgBr. Something more or less you have to remember, nothing so much of explanation over here. So with this we come to an end to the video of the video, and I just hope it was helpful to you in any way. So thank you for watching. I'll see you in my next one.